Assalamualaikum. I hope आप सब खैरियत से हैं. This is a quick video to show you on how to go about making your chatbot for your latest assignment और इसे submit कैसे करना है ताकि आपकी evaluation हो सके. ठीक है? So let's begin. First thing that you need to do is open Gemini. So gemini.google.com is the name of the website. I'm sure आपने ये इस्तेमाल किया होगा in your day-to-day lives alongside ChatGPT and so on and so forth. अब आपने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू लॉग इन विद योर गूगल अकाउंट और इसके अंदर ऑफ कोर्स यू नो देयर सो मच दैट यू कैन डू ऑन चैट जीपीटी but we're here to talk about a very specific part of it called gems. Gems basically गूगल का तरीका है चैट बॉट्स को नाम देने का. गूगल ने अपने खुद के भी बनाए हुए हैं चैट बॉट्स दैट यू कैन यूज बट वी विल मेक आवर ओन. सो क्लिक ऑन न्यू जेम और आपके पास तीन इनपुट फील्ड्स हैं नेम इंस्ट्रक्शंस एंड नॉलेज. सो लेट्स गो अबाउट ईच एंड वन ऑफ देम. लेट्स से मैंने एक चैटबॉट बनाना है व्हिच आई वांट टू हेल्प मी लर्न राइट लाइक मेरे लिए समझे एक वो बना देगा क्या नाम है एक प्रॉपर study schedule banane ka, let's say, right? Like I want to prepare for an exam, and this GPT, this gem, this chatbot will help me prepare for it. Okay, so let's give it a name. Let's name it Verify Health Coach slash Ustad. Right? Why not? Instructions के अंदर क्या लिखना है? What does Gemini say it needs? What are the gem's main objectives and capabilities, and what style of response do you want? So, of course, you can write anything you want here. Let's be very simple और हम AI को कहेंगे कि मेरा जो prompt है उसे enhance करे. Let's say I just want this chatbot should be designed as a study assistant, ठीक है, for medical and allied health sciences students, ठीक है, and of course other healthcare learners as well. ठीक है. Its job should be to help students. वो कैसे? By creating personalized study plans. ठीक है. Or let's try to make this better. Also include a way to take daily quizzes. Or what else can we do? Based on the schedule और कोई तरीका हो, let's say, and also a way to analyze my performance and weak areas. सही? Because that's important क्योंकि हमें चाहिए जब भी हम पढ़ें तो हम वीक एरियाज पे ज़्यादा फोकस करें, राइट? आसान चीज़ें तो जितनी दफ़ा भी कर लो आसान ही रहेंगी, लेकिन मुश्किल चीज़ों को बार बार करेंगे तो आसान हो जाती है. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब हमें बतानी है. लेट्स से बेसिकली इट विल आस्क द यूज़र कि लाइक उनके एग्ज़ाम का क्या नाम है, व्हाट एग्ज़ाम आर दे प्रिपेयरिंग फॉर. क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक मॉड्यूल एग्ज़ाम है तो अलग टेंशन है, सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम है तो उसकी अलग टेंशन है, राइट? सो you know you have to keep in mind the chatbot should keep in mind those things. What exam are they preparing for, right? And कितने दिन रहते हैं, like how many days are left before it, what topics need to be covered, right? And how many hours of a day can the user give for study. ठीक है, ये सब मैंने बता दी. उसके बाद ऑफ कोर्स जो मैंने उसे कहा कि यू नो हेल्प मी मेक अ स्केड्यूल and then make quizzes, right? Quizzes, and then basically like at the end of the day I want it to motivate me. तो मैंने let's say उसे कहा कि encourage the user um, on its revision. सही है. ये मैंने एक बहुत जनरल एक prompt दे दी. It's not that good. इसके अंदर of course बहुत सी चीज़ें missing है. But let's see how Gemini can rewrite this. तो मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया. Okay, it's unable to rewrite this.
but that's fine. I don't think that's a problem. What you can do is copy this and go to ChatGPT and ask it to make it better. So, can you make this prompt better? Say it. Okay. Well, now we know what's the better chatbot, right? अच्छा, तो ये इसने हमें एक updated prompt लिख दिया. That is awesome. अब देखो इसके अंदर कितना फर्क है, जैसे मैंने लिखा था और इसने जो लिखा है. Of course, it's gonna be better. तो ओके, साउंड्स गुड. इसके अंदर डिटेल काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा प्रॉम्प्ट है. तो आई रिकमेंड कि आप एक दफ़ा खुद से ज़रूर लिखें. सही है, खुद से ऐसे लिखें. अगर ये एनहांस का फीचर नहीं चल रहा तो फिर जाके चैट जीपीटी या जेमिनाई से एक दफ़ा इसे वापस लिख दें. राइट. सो let's I copy the whole thing and I paste it here. Okay. Now नॉलेज के अंदर क्या है कि आप बेसिकली कुछ फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं. तो लेट्स से मैंने आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अपलोड कर दिया. सही है, जस्ट फॉर फन. सो ताकि ये और पर्सनलाइज्ड हो जाए आपके हिसाब से. तो अब मैं इसे सेव कर दूंगा. वंस इट्स सेव्ड, लेट्स चेक इट आउट. सो लेट्स स्टार्ट अ चैट. ओके. सो अस्सलाम वालेकुम. Say what it says. Of course it's going to take some time because अभी अभी बना. Alright. सही है, तो इसने मुझे बता दिया सेमेस्टर 1 के अंदर ये सारे हैं. राइट. सारा कंटेंट ये रहा. तो मैं लेट्स से आई वांट टू स्टडी फिजिक्स. राइट. ऑफ कोर्स इसके अंदर वो पूछेगा आपसे कि कितने दिन रहते हैं आपके एग्जाम से पहले, हाउ मेनी आवर्स कैन यू डेडिकेट, सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. ये सारे टॉपिक्स उसने बता दिए. लेट्स से मेरे पास हैं सिर्फ 2 दिन, 2 days, and I would like to have a brief overview of each topic. सही है. So anyhow, I believe in chatbots के बहुत फायदे हैं. Like this is just one example, but you can think of so many ways जिसके अंदर आप bring your own twist into this, make this better, and of course bring your own ideas as well. I'm sure ideas की technically एक repetition होगी, right? But basically, I'm sure you can think of something unique as well alongside it. ठीक है, so on and so forth. This is how the chatbot works. Let's talk about one final thing. How do you submit this? क्योंकि देखो ये लिंक तो सबमिट नहीं हो सकती, राइट? आपने बेसिकली क्या करना है कि दिस इज योर फॉर्म. यू गोना फिल इट आउट विद योर ईमेल, नेम, रोल नंबर और चैटबॉट का नेम. लेट्स से मेरा चैटबॉट का नेम ये था, तो मैंने ये डाल दिया. चैटबॉट के इंस्ट्रक्शंस क्या थे ये मैंने पूरे डाल दिए, right? And then I pasted it over here. And what can this chatbot be used for? So, is this case, this is for exam preparation. ठीक है. Upload an image of your Gemini workspace. इसके अंदर आपने basically कोई इसे prompt देना है, right? Like basically मैंने इसे कहना है अस्सलाम वालेकुम, or you can ask anything, not necessarily कि आप उसे सलाम ही दें. But anyhow, क्या करेगा कि वो एक रिस्पॉन्स देगा. ठीक है. यू गोना वेट फॉर दैट रिस्पॉन्स एंड ओके, ये रिस्पॉन्स आ गया, राइट. आपने बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस पूरे उसका. ठीक है, दिस होल थिंग, एंड यू आर सिंपली गोइंग टू अपलोड इट ओवर हियर. ठीक है. लेट मी जस्ट सेव दिस. और ये मैंने बेसिकली यहाँ पे अपलोड कर दिया. ठीक है. Once that's done, I am good to go. I can submit this response. Okay, this is how you're supposed to go ahead with your assignment for this week's, uh, you know, assignment for this workshop. Okay.
मैं शिफा 1 का भी आपको I'll record this as soon as possible and send that over as well. I hope इसमें आपको follow along करने में मसला नहीं होगा. Of course, any other questions you have, feel free to send them on the group. I'll respond to them as soon as possible. Okay? Take care. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.